So, hello everyone. I hope you all are doing good. So today we are going to start national income. Just wait. So today we are going to start our national income. So before national income, let me tell you first macroeconomics. So before today we are going to start our national income. So So we will deal first about we will see first macroeconomics, and then in macroeconomics there are so many scopes like national income, theory of employment we will see. After that we will see equilibrium. Okay, then we will see just a bit and so many things. So first let me tell you macroeconomics. There are so many factors will come in macroeconomics like government, firms, and external sectors. Okay, like firms, government, firms, and we can say households and government, firms, and external sector. So these factors constitute macroeconomics. So let me tell you the first what is macroeconomics and what is microeconomics. In economics, two concepts, that is, the first one is macroeconomics and the second one is microeconomics. Okay, so in macroeconomics basically the word came from Greek. Okay, Greek, that means macros, which means large. Macroeconomics, मैक्रो वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब मैक्रोज वर्ड से आया, जो कि ग्रीक वर्ड से आया, इसका मतलब होता है लार्ज. बात अगर माइक्रो की करें तो माइक्रो जो है ये भी ग्रीक वर्ड से आया, दैट मीन्स माइक्रोज, which means small. Okay, so we can say if we talk about like national income, total employment, and total GDP or total national income of a country, then they will talk in macroeconomics. And in microeconomics, a small or individual perspective if they see. अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, और एक इकोनॉमी एज ए होल की बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा. इसमें है जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम number one. Second, theory of employment. Theory of employment. Third, general equilibrium, and many more. And in microeconomics, we can say consumer demand, number one. Number two, individual's income. Third, producer's supply. That means we are talking in microeconomics. Now, going ahead, and as I told you that there are so many scopes of macroeconomics. Then in macroeconomics, we will see national income, total employment, inflation. Okay, so let me define again the meaning of macroeconomics.
Meaning of macroeconomics. As earlier, I was telling you that the word macroeconomics came from. So macroeconomics came from Greek word which means macros, and macros means, or macros word stands for large, whereas micros also came from Greek word that means micros, that means small. Okay, so in the proper definition of macroeconomics is the term macro in English. We can say when any economic activity when any economic activity taking place as whole, or when we will talk national income of whole economy. In other words, we can say like inflation of economy, or inflation of a country, theory of the theory of employment and total employment. Okay, not theory of employment, total employment. If we take this, then this will come in microeconomics. Okay, so moving ahead, second thing, given by Spencer. M.H. Spencer, which is he is basically an economist, and he also given the definition of macroeconomics. So macroeconomics, he defined macroeconomics in his own words. Macroeconomics concern with the economy as a whole. Got it? Or large. So when we are talking with large perspective and the economy as a whole perspective, then we can say we are talking of macroeconomics. So large segments and whole segments of it. In macroeconomics, attention is focused. Attention is focused on such problems as the such problems as the inflation, the nation's output, and other matters of economy wide significance. So this definition basically given by M.H. Spencer, who has been an economist. Okay, significance. Now, if we see the basic difference between microeconomics and macroeconomics, then we can say microeconomics and macroeconomics. As I told earlier, that micro word means small, whereas macro word means large. Second difference is, if talking in terms of economic variables, then we can say microeconomics variables such as consumers demand. Okay, consumers डिमांड. अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो ये सेकंड बेसिक डिफरेंस जो है वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आएगा. इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है? जब हम लोग कंज्यूमर्स डिमांड्स की बात करें या प्रोड्यूसर सप्लाई की बात करें, सिंगल पर्सपेक्टिव से प्रोड्यूसर सप्लाई और इन ए पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, देन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सेकंड,
माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, गॉट इट। इकोनॉमिक एजेंट की बात करें तो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से ऐसे इकोनॉमिक एजेंट होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, तो वो हो सकता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक अफेयर्स, या इकोनॉमिक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर who can take economic decision in microeconomics, okay, so individual economic affairs। सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डिसीजन कौन ले सकता है, क्योंकि ये एज ए होल की बात कर रहे हैं, ये हम एज ए होल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो इसमें जो होगा आरबीआई, ऐसे इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक आरबीआई, सिडबी, सेबी, आईआरडीआई, एक्सेट्रा, ओके। तो ये सब हो गए इकोनॉमिक एजेंट्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। अब थर्ड में देखें कि थर्ड में जैसे कि एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दिया था। एडम स्मिथ वाज हु? द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ओके। ही इज द फादर ऑफ ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, got it? So he defined Adam Smith basically, I told that father of modern economics, okay, and he was basically Scotsman, and and also was in professor at the University of Glasgow, okay. So he has given a well-known book. The name of book was uh, an inquiry, an inquiry, an inquiry into the nature and cause of wealth of nation. Wealth of Nation, given in 1776, a well-known book. अब इमर्जेंस की हम लोग ये बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस कैसे हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्यों आया, कब आया, we will talk about. So emergence of macro emergence of मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहां से इवॉल्व हुआ? एक इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मेनार्ड केन्स, इसे बोला जाता है द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे कंसिडर्ड किया जाता है, इन्हें कंसिडर्ड किया जाता है द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो जॉन मेनार्ड केन्स को माना जाता है कि ये क्या है, फादर है किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। उन्होंने भी एक बुक पब्लिश किया था, जो नाम है बुक का द जनरल थ्योरी